ओके, हम लोग माशाल्लाह ऑन द 20th आया थे और इसको क्विकली से हम देख लेते हैं ताकि वो एक मोमेंटम बिल्डअप हो जाए। मे बी यू कैन हेल्प मी इसको ट्रांसलेट, बल्कि यहाँ पे ट्रांसलेट करें ना, वहां पे छोड़ें, यहाँ ट्रांसलेट करें। ठीक है, लेट्स ट्रांसलेट हियर। ठीक है, पता है आप लोगों को सब। ए अलमु अन्नमल हयातुद दुनिया, क्या मतलब है? No, indeed. नो, that दैट द वर्ल्डली Worldly लाइफ life. इज Worldly life. is Nothing but nothing but हाँ, लाइबुन व लहवुन, लाइबुन खेल तमाशा, खेल तमाशा, प्ले, amusement amusement, लहवुन अम्यूजमेंट, Yes. व ज़ीनतुन and beauty, ब्यूटी, Zina is adornment, like- वरना सवरना, yes, adornment, adornment करेक्ट, व तफाखुरुन बैनकुम, and Among between you Boasting among Boasting. yourselves. boast between yourself, व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलादी, of and उसकी बहुतात को क्या कहते हैं? तकासुरुन Compare. मतलब उसकी ज्यादा होने पे या competition competition in the wealth in or wealth in and children. children और कंपटीशन के अलावा इसका एक और भी है, एक्सेस डिजायर टू हैव इट। Yes. ठीक है, दैट्स आल्सो तकासुर। कमसली गैस, It's like the right amount of rain इट इज लाइक अ perfect rain, perfect rain अजबल कुफ्फारा नबातहु, pleases pleases the farmer Farmer. with it pleases the growth that happens from it pleases the farmer. Summa yahiju, then it grows नहीं, जब कोई प्लांट खत्म होने वाला oh होता है, dries when it dries dries up, then it Then dries. dries. فتراهن مصفرا, tarafika and when it turns yellow you see it oh turning you see yellow, it See it turning yellow. you see it turning yellow. turning yellow. Summa yakunu hutaman, Then it becomes Destroyed. I think. Debris. debris then because Debris. debris, crunchy, gone. وفي الآخرة عذاب شديد, and there is a Great punishment. great punishment in great hereafter. punishment, severe punishment. Severe Great punishment. ومغفرة من الله, and forgiveness is from Allah and forgiveness from Allah. وردوان, and His pleasure and pleasure. pleasure. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, And whatever is In the worldly life. life is So again, Mata that is like your ma and illa mal, is yeah. Is and Gurur is delusion, deceiving, to be delusional. There is delusion. nothing. Nothing Delusion. but Mata al-ghurur, an entertainment of delusion, as if you're in entertainment scenario, but actually it's a test, you don't realize it. Yeah. Right? So mata al-ghurur. So यहाँ पे हमने combination देखा था मा और इल्ला का combination. nothing but. Nothing but. Nothing but. Nothing but. ठीक है, good, कर लिया आपने, जबरदस्त. You still remember, very good. So that's where we are. So Allah Ta'ala in this ayah, Allah has talked about maghfirah. So let's go ahead and see what's next, inshallah. वसाबिकू, क्या कौन सा वर्ड है, क्या वर्ड है? Fail. Fail. फेल है, इट्स अ फेल. गुड, कौन सा फेल? लग रहा है. ये तो फाइल बताया ना आपने मुझे, Oh, फाइल sorry. बता दिया आपने मुझे, ठीक है. फेल कौन सा है ये? Active. इट्स एक्टिव, ठीक है. Oh, ये वो तो और नहीं क्या है इस command. फेल के बारे में? No, it's command. इट्स कमांड. सब एग्री करते हैं कि कोई लग रहा है पर
नहीं भी लग रहा। बी से कंफ्यूजन हो रही है, बी एलमू से अगर ये कमांड है तो इसका प्रेजेंट टेंस फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? साबिकूना। साबिकूना। आप क्या क्या रिमूव करते हैं कमांड में? आप एक नून को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और और आप उसकी बिगिनिंग को भी रिमूव करते हैं। बिगनिंग को बिगिनिंग आप तो लाए होते हैं सेकंड पर्सन के अंदर, सेकंड, हाँ, और सेकंड पर्सन की बिगिनिंग क्या होती है? ता ता होती है, तो पहले तो ता लगा देते हैं ना। तसाबिकु हाँ, हो गया, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद नून लगा दें, तसाबिकूना, तसाबिकून, दैट वाज द फुल फेल, ठीक है। फिर आपने नून हटाया, ता हटाया, साबिकु बन गया, दैट्स अ कमांड। सो द डायरेक्शन इज फाइन, इट्स कमांड, बट हम हमारे अंदर एक एबिलिटी हमने बिल्ड करनी है कि वी कैन गो बैक एंड फोर्थ फ्रॉम कमांड टू फेल, फेल टू कमांड, ऑल ऑफ दैट एबिलिटी, इट्स अ कमांड, ठीक है, एंड इट्स अ कमांड गिवन टू होम? नहीं, the people who are trying to get You. maghfirah. यू To which pronoun this command is given to? यू Oh, नहीं, फिर ये हम नहीं होगा, it is antum Antum. because it's second person. Antum. Sorry. Very good. Antum. Now it's a full correct answer. It's a command. And command always comes from present tense. इसका मतलब होता है to race. To race. यानी रेस लगाना किसी के साथ. ठीक. So Allah is basically saying race! Exclamation mark. आप थोड़ा सा रेस के बारे में सोचते हैं. जब आप किसी के साथ रेस लगाते हैं, क्या वन पर्सन रेस हो सकती है? नहीं, नहीं ना. रेस लगाने के लिए एक कम से कम एक और चाहिए होता है आपको, कंपैरेटर, राइट? सो अल्लाह ताला इज सेइंग रेस टुवर्ड्स व्हाट? Towards maghfirah. towards maghfirah. हर्फ ऑफ जर, ठीक है, हर्फ ऑफ जर, एंड दिस इज द इसम मगफिरा, ठीक है, तो इट्स अ फुल हर्फ ऑफ जर फ्राई यहां से लेके यहां तक. सो अल्लाह इज सेइंग रेस टुवर्ड्स मगफिरा. और यहां पे अल्लाह ताला ने पहले आपको बताया वह मगफिरतुन मिन अल्लाह. So there's a connection with the previous ayah. That maghfirah is only from Allah. ठीक है? And और next ayah immediately आपको command देती है कि go race towards the maghfirah. अब race से कुछ grammarian scholars ये कहते हैं कि we should be competing with each other in good. Actually, comparison is good when you do it for good. Comparison is not good when you don't do it for good. When you do it from the perspective of exceeding in the world. But when you do it from the perspective of exceeding in the akhirah, it's a healthy thing. It's a healthy thing to do. कि यानी उस सेंस में नहीं कि आप बोस्टिंग की आपकी नियत हो, लेकिन यहाँ पे encouragement ये है कि go ahead, ask for forgiveness, because of course there is no, Allah Ta'ala doesn't have a capacity limit. He can put everyone in Jannatul Firdaus. He can put everybody in hellfire. There is no capacity limit, but he wants to see the effort. Who is more keen towards that, the biggest reward that he wants to give. So race towards maghfirah. एक और आया है कुरान में, आई थिंक इट्स डिफरेंट सूरह आल इमरान में है, किसमें मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली सेम टर्म्स है, बट उसमें अल्लाह ताला ने वर्ड चेंज कर दिया, रेस की जगह रश टुवर्ड्स द मगफिरह. अब रश जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो सकती है. वी डोंट ऑलवेज रश इन अ ग्रुप. स्लाइट चेंज. तो वहां पे इंडिकेशन ये है कि दिस इज समथिंग यू शुड डू इंडिविजुअली. फॉर एग्जांपल, आई टेक अ लेसन फ्रॉम दिस कि एज अ फैमिली आई नीड टू मेक श्योर माय फैमिली डज अ लॉट ऑफ seeking of maghfirah. It's my job to convince my wife, my kids and everyone to come together and make it an activity. So इंशाल्लाह बहुत सारे इससे मतलब निकल सकते हैं. साबिकु इला मगफिरत. अब कौन सा जुमला है ये? Is it a जुमला फेलिया, right? Yeah. So we have 1 and 2 here. Yeah, and mutallaq. And we have 4 here. ठीक है? Exclamation mark एंड में आ जाएगा.
towards forgiveness. Race towards forgiveness. That's a complete command. Okay? Race towards forgiveness. Forgiveness from what? Min rabbikum. आपको पता है ये harf of jar fragment, Harf of jar. right? Rabbikum is idafa. Idafa. From your master. Good. अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता दूं कि कई अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं लगता इंग्लिश में। आप ये नहीं कहते आई लव द इस्लाम। ऑफ कोर्स आप कहते हैं डिपेंड अपॉन कि आप कहां से आए हैं, लेकिन I love the Islam is a wrong sentence. I love Islam is a wrong sentence, right? You say I love Islam. That's what you say. I want the I want a freedom. I want the promise. I want promise. I do promise. कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ आर्टिकल इंग्लिश में भी नहीं लगाया जाता. It doesn't really go well, right? तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको ग्रामर में वर्बल नाउन्स कहा जाता है. वर्बल नाउन्स, और अरबिक में उनको मस्दर कहा जाता है. ये वो वर्ड्स होते हैं जिनसे सारे अल्फाज निकलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम इज अ मस्दर. इट्स बेसिकली इट्स अल इस्लाम. ये एक मस्दर है, एक सेंट्रल वर्बल नाउन है जिससे सारे वर्ड्स निकले हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम, अस्लमा, युस्लिमु, फिर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, अस्लिम, द कमांड एंड एवरीथिंग. It comes from that main root word. That root word is called a verbal noun, even in English. Okay? ये जो verbal nouns होते हैं अरबिक लैंग्वेज में as standard अल के साथ यूज किए जाते हैं. आप कहेंगे उहिब्बुल इस्लाम, यानी I love Islam, लेकिन आप द लगा देंगे. अरबी में आप अल लगा रहे हैं लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे. ठीक है, ये ऐसे सिनेरियोज होते हैं. तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं, और मगफिरा भी एक ऐसा ही लफ्ज है. इट्स बेसिकली द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग मगफिरा इज अल मगफिरा. It's a standard way of writing it, but sometimes that al is removed, and that is removed to show the emphasis of that word, the magnitude of that ask. तो आप इसको कहेंगे really genuinely raised towards the maghfirah, because इस वर्ड को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका था जो कि था अल मगफिरा, जो कि एबनॉर्मल कर दिया गया. इसकी वजह से अरबिक में क्योंकि पंक्चुएशंस तो होती नहीं है, कुछ ड्रॉप कर दिया जाता है या कुछ ऐड कर दिया जाता है, उसी से एम्फेसिस पता चलते हैं, या जगह बदल दी जाती है उससे एम्फेसिस पता चलते हैं. तो अल मगफिरा when changes to maghfira is basically putting an extra emphasis on it. So that's an important point जो मुफस्सिरून है या जो रिटोरिक और बलागा के स्कॉलर्स हैं वो इसको इस तरह देखते हैं कि this has a hidden emphasis in it, a real motivational urge that Allah is giving us through this command. Erase, go, don't you realize what you're doing? The hayat ad-dunya is mata'al ghurur. Go race towards the forgiveness. Make it a point, make it a priority from your Lord. That's what it means. Okay. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, कुछ है? हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि 2 हर्फ ऑफ जर क्यों है? आ तो सकते हैं, कोई मसला आ नहीं है. सकते हैं? अच्छा जी. हाँ हाँ, सही. इसमें कोई इशू नहीं है. या मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद इज इट अनदर सेंटेंस या फिर करते हैं ना लेकिन वो analyze. सेंस नहीं बनती उसकी. जी, करते हैं ना एनालाइज. आप अगर इंग्लिश में कहें आई एम गोइंग टू द किचन इन माय हाउस,
right? To the जी kitchen is a harf of jar. In my house is is a harf of also jar. जी ठीक है, तो इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं कि दो हर्फ ऑफ जर, लेकिन सवाल ये है कि क्या मिर रब्बिकुम का मगफिरा से कोई रिलेशनशिप है? इज इट फॉलोइंग अ पैटर्न जो कि हमने पहले किया हो? और ये वो बदल तो नहीं है क्योंकि ये हम उनके साथ मतलब मगफिरा इज फ्रॉम अल्लाह जी, मगफिरा इज फ्रॉम अल्लाह, बिल्कुल। तो क्या कहना चाह रही हैं? मतलब सिफा तो नहीं है लेकिन हम्म, बदल के तौर पर नहीं आएगा। अगर मैं मगफिरतिन को चेंज कर दूं रसूलिन में, कॉम्प्लेक्स ओ सिफा के तौर पे रसूल में मुकाबला तो बन गई ना एग्जाम्पल जो हमने की थी। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सिफा सही हाँ जी वो because जो mir हमने rabbikum is as a sifa related to maghfirah. सही ठीक है ठीक है, इट्स द सेम पैटर्न जो कि मेरे ख्याल पीछे हमने भी था हमारे जी पास, राइट? रसूल में मक्का वाला यहाँ पे भी यही था, यहाँ मिन अल्लाह था। ठीक है, so this is kind of a sifa, so let's put it down here like this is complex sifa, this entire thing, it's related to maghfirah wa jannatin and गार्डन्स And ataf ji, and it's a standard ism and a garden. अच्छा, अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, यानी एक पॉइंट टू पॉन्डर है। ये द गार्डन नहीं है, अल जन्ना नहीं लिखा हुआ इधर, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बुक एंड द बुक? आ बुक कोई भी बुक हो सकती है और द बुक जो है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है? क्या डोंट वी नो व्हाट इज जन्ना? अगर कोई हमें 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 अल जन्ना कहा जाए, हमारा माइंड जाएगा ना उस डेफिनेशन ऑफ जन्ना पे जो कुरान हमें बताता है, राइट? जो भी जी हमें पता है उसके अंदर क्या होगा, रिवर्स होंगे, ये होगा वो होगा। तो Allah could have said al-Jannah because Allah has told us a lot about Jannah even in this surah before and in various places in the Quran. Okay? But Allah chose to say Jannah, not al-Jannah. अब इस पे से हो जाए, जब आपको किसी को एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवानी होती है, an idea or thing that he hasn't really taken before from you. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ आए, मैं आपको लेट्स गो टू द गार्डन, एंड हमारी एक रूटीन है जो कि हम लिडियर पार्क जाते हैं साथ, फॉर एग्जाम्पल, या पामा पार्क जाते हैं एवरी सैटरडे, लेट्स गो टू द पार्क। लेकिन एक दिन मैं आपको कहता हूँ लेट्स गो टू ए पार्क, नॉट द पार्क। यू माइट आस्क मी अ क्वेश्चन कि आज हम लिडियार्ड में नहीं जा रहे या पामा में नहीं जा रहे, बिकॉज दैट ए gives you a hint that this is something new. It's not the same, not the same thing that I knew. So when Allah says Jannah, basically grammarians or kuch scholars ye kehte hain कि this is Allah's ways of telling us whatever you know about Jannah, there is always something new that I have for you. That garden you may not even know. This is a garden you may not even know. So that's why not Al-Jannah. ये बहुत सटल चीजें हैं जो कि रिटोरिक और बलागा स्टडीज में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी की जाती है। हम लोग तो ट्रांसलेशन के लेवल पे हैं, तो वहां पे हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम कभी उस रूट पे जाएं, इट्स अ फुल वर्ल्ड इन इटसेल्फ कि कुरान के अंदर कौन सा वर्ड कैसे यूज हुआ है, कौन सी चीज मिसिंग है, नॉर्मल तरीका क्या होना चाहिए था, इसको इस तरह क्यों नहीं यूज किया गया, और उससे फिर विजडम निकलता है। ये जो मुफस्सिरून होते हैं, ये तफसीर लिखना एक बहुत बिग डील होती है, एंड इट्स अ मेजर अचीवमेंट।
ये जो इब्न कसीर हैं, इब्न अब्बास हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखी हुई है, दे ऑल थिंक अबाउट दोज थिंग्स। उसके बावजूद काफी लोग मिस आउट करते हैं। और आजकल के टाइम में तो जो रिटोरिक है, बलागा स्टडीज, इट इन इटसेल्फ इज अ फील्ड। अर्ली इस्लाम में ये फील्ड नहीं थी। जब कुरान प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब कुरान यूज्ड टू बी स्टडीड, nobody thought about these things because their native language was Arabic. They didn't think about it. This thing started to propagate more when Quran reached people with some other language skills. And they started to consume Arabic language, learn Arabic language. They started to ask questions. और शुरू के स्कॉलर्स ने तो रिजेक्ट भी किया इस बात को कि इन आयास का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस वर्ड को ऐसे क्यों यूज किया है, ऐसे क्यों नहीं यूज किया, इट हैज नो इम्पोर्टेंस। बट ओवर टाइम this thing became a full-blown study in Islamic studies. इसको coherence of Quran भी कहते हैं, इसको बलागा studies या rhetoric studies भी कहते हैं। Okay, so race towards the maghfirah from Allah and a garden. Arduha. Let's identify the construct. क्या construct है ये? इदाफा। इदाफा। Good. This is इदाफा। अर्थ, उर्दू में पता है आपको, हम पूछते हैं इस कपड़े का अर्थ क्या है, इस कपड़े का अर्थ क्या है, पूछते हैं ना, Yeah. वो क्या होता है? मेजरमेंट, Width. Breadth. विड्थ। length। विड्थ होती है, ये भी वही है, हम्म। ये भी विड्थ है। अर्दुहा इट्स विड्थ। किसकी विड्थ? God. क्या ख्याल है? जन्ना, Jannah की। जन्ना। जन्ना, it's a ha, it's a feminine, it's here, it goes back to the feminine, Jannah. Yeah. Right? It's with, now you're defining Arth as the Jannah, just like you defined the Maghfirah with a complex sifa, now you're defining the Jannah. It's more description of that Jannah. Arduha, its width. Arduha is what status? Rafa, Nasab, Jar? jar। नहीं, एक आइसक्रीम डी हो गई आपके ऊपर। अब बताएं। नहीं, बाद में, क्योंकि अर्थ अगर वो है लाइट, आप देखें ना, आप देखें तो वहां क्या लिखा हुआ है, अर्दुहा। नहीं, मैं तो Attached border. अटैच इदाफा है। में, लेकिन फिर तो इदाफा है, तो इदाफा में तो लाइट और जर स्टेटस में ही होना चाहिए। नहीं, कोई भी स्टेटस तो कोई भी हो सकता है, लाइट होना चाहिए। आप पीछे देखें, रब्बी कुम है ना, इज इट इदाफा? हाँ जी। रब्बी जर, राइट? स्टेटस तो कुछ भी हो सकता है, इट हैज टू बी लाइट। सो यहाँ पे क्या स्टेटस है? अर्दुहा मुदाफ इलेह का स्टेटस जर नहीं होना चाहिए? मुदाफ इलेह का, यस, नॉट मुदाफ। तो मुदाफ इलेह हाँ इज ऑलवेज जर, एग्रीड, जी। ठीक है, पर मुदाफ डजंट हैव टू बी। तो अर्दू जो है वो मुदाफ है और हा जो है वो मुदाफ इलेह है। जी बिल्कुल, एग्रीड। तो हा इज जर फॉर जी। श्योर। सो आई एम आस्किंग, अर्दुहा का स्टेटस क्या है, इदाफा का स्टेटस क्या है? इदाफा का स्टेटस किससे पता चलता है, मुदाफ से या मुदाफ इलेह मुदाफ से? से। तो मुदाफ का स्टेटस क्या है? जन्नतिन इज ब्रोकन प्लूरल, तो इसको नहीं, जन्नतिन तो बिल्कुल अलग वर्ड है ना। अर्दू Ardu. रफा अर्दू, अर्दू। वी लुकिंग एट अर्दू, राइट? अच्छा सही। अर्दू इज जी। रफा। रफा, बिल्कुल। ओके ओके सही। कॉमन और प्रॉपर? Common. और कॉमन दूसरी नहीं, आइसक्रीम लेकिन ये जन्नातिन के ओ हा लगा हुआ है तो प्रॉपर, सॉरी, तो proper। ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, because the ha is proper. So it's proper, it's rafa, it's singular, it's masculine, basically. Okay? Rafa, singular, masculine, proper. This is what we're talking about. जब एक इसम रफा हो, प्रॉपर हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या हो सकता है? Mubtada. मुब्तदा। मुब्तदा हो सकता है ना, मुब्तदा हो सकता है,
So shall we mark it A for now? Mhm. Arduha. Its width. उसके बाद क्या आएगा? Invisible is आएगा. जी 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 Its width is. كأرض السماء. كأرضي क्या है? Let's decode that. Like ka is like harf of jar. Half of your fragment. Very half good. of your fragment का Very good. So अब हमें पता है अर्ज का मतलब क्या होता है. हम्म, तो कअर्जी क्या है? Like width. Like तो ये हो width. गया मुतल्लिक सी जी ये सी होगा बिल्कुल. Absolutely right. This going to be C. And let's complete this. कअर्जी हमें पता चल गया. कअर्जी is a half of jar fragment. And what about as-samai? Why is as-samai jar? क्योंकि ka if का is harf of jar. Ka का तो हर्फ ऑफ जर है, उसने अर्दी को जर कर दिया, राइट. और उसके साथ ही फिर और नहीं, लॉन्ग क्योंकि ये डिस्टेंस तो उसकी होता ही नहीं है. सिफा उसके साथ सिर्फ सिफा है उसकी नहीं नहीं इदाफा इदाफी इदाफा इदाफा. गुड. दिस इज इदाफा. वेरी गुड. यानी इदाफा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बेसिकली दिस इज मुदाफ इलैह. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे. ओके सही है. दिस इज मुदाफ इलैह व्हिच इज ऑलवेज जर, and this is mudaf. Ardi is mudaf. And this whole thing becomes C. क्लियर है यहाँ तक? हम्म, ओके. वल अर्दी आगे. अब क्या करें? वो उसके साथ वो भी अतफ जर हो रहा में है वो भी जर में वो भी तो मुदाफ इलैह बन जाएगा, राइट. जी Ataf है, it's a follower and is going to extend like this. ठीक है. अब कर दें ट्रांसलेट इसको. अर्दुहा का अर्द समाई वल अर्द. its width is like its the width width of is the skies and the Like the and width of the sky the earth. and the earth. Good. Oh my God, can you imagine a garden whose width garden. is like the width of the sky and the earth? और एक और चीज बताता हूँ आपको मैं. जो वर्ड समा होता है ना, समा के दो माने होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. एक जो हमें पता है, द असमा उद दुनिया, द स्काई ऑफ द वर्ल्ड. हमें पता है there are seven skies. Allah says in the Quran, sab'a samawaatin tibaqa. I created seven skies in layers. Sky 1, sky 2, sky 3, sky 4 and so on. But sama का एक और मीनिंग होता है, that is anything above you. Anything above you. Your ceiling is a sama as well. Anything above you. अब it depends on how you interpret it. अब कुछ scholars कहते हैं this is sama, sky, because we know it. कुछ कहते हैं Allah is saying कि this is a garden which is common. Allah is saying there's something new that you are not really aware of. And it's with this like anything above you. So what is above you? You have the entire Everything. skies, you have the arsh, you have I don't know what not. Stars, sun, So the everything. question is कि क्या sama as a sky is bigger dimension or sama as in everything above you is a bigger dimension? Which one is a bigger dimension? Everything above. Everything above you, because that would include everything, even beyond the seven skies, right? So there are two ways of looking at it from wisdom perspective, okay? Because there are two meanings. Okay, and maybe that is the reason Allah mentioned Jannati, because we have not thought of Jannah like that before. He's actually giving us the dimension. Okay, okay, good. Good.
Uiddat. Immediately when you look at this word, uiddat, what do you get in your mind? क्या क्या नजर आता है आपको? Fail and passive. अरे वाह, नहीं, आपने अपनी आइसक्रीम सरेंडर करवा ली है मुझसे. गुड. This is fail and this is passive. Very good. This is a fail. What type of fail is this? present. present. Oh, sorry, past. यहाँ पे गलती हो गई. Over. Past. Ins- कैसे पता चला हाँ. past है? Ansuru, nansuru. तो How do we know Beginnings? this is past? मैं आपको बताऊं किस चीज ने आपको कहा होगा, फोर्स किया होगा टू से इट्स प्रेजेंट टेंस. दैट्स अ हमजा इन द बिगिनिंग. Alif ने कहा था. स्टार्टिंग जो है ना ऊ है. जी. Alif, हाँ जी. But and that's a common mistake many do, because you have to look at the beginning and the ending with the present tense. Right? This is past, and the ending tells you it's past. It's like Nasarat. Okay. Right? So this is the past tense. Past. What pronoun? Here. Yeah. Good. इसका मतलब होता है to prepare. To prepare. तो अगर ये past tense here है and it's passive, File. जी. So it has already given me 1 and 2. Oops, sorry. It is prepared. It is prepared. For those. ठीक है. Listen. अब what do you think this pronoun goes back to? Jannah. 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 It is prepared. Here. It is prepared. अब आगे बढ़ लेते हैं. ये वाला simple part है. I believe you should be able to do it quickly. Am I going to get 1 and 2 here? Right? Okay. Lillazina amanu billahi wa rasuli. ये simple होना चाहिए. The lam is harf of jar. Harf of jar fragment. Fragment. Good. And then you have ism mawsul. Masul. Yes. Right? So let's go ahead and find out silatul mawsul. So amanu. It's a fail. Same. Fail. कौन सा fail है ये? Past. Why is this not a command? फिर वो था. Aminu. Aminu. मीन के नीचे कसरा होता है. कसरा. आमनु versus aminu. Good. This is home. Okay. 1, 2. Billahi is clear cut harf of jar fragment. War rasulihi is Idaf. of course Ataf and Ataf. an ataf and idafa. And rasuli is jar because of the status carrying over from the word Allah all the way to rasul. Okay? Good. So we're good with that. So let's translate this. It is prepared For the For ones those. For those who believed believed in Allah in Allah in Allah and His messenger. messenger. and his messenger. अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है सोचने वाला. क्या सिर्फ हम लोग ही हैं, meaning the ummah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, who believed in Allah and his messengers? No. और यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ये रसूल नहीं है, इट्स रुसुल. This is not messenger, messengers. Yes. Broken plural, right?
So this ayah is actually going back all the way to every messenger Allah sent. Mhm. And at that time, those who followed that messengers, this also goes for them. It goes for Musa alayhi salam's nation, Isa alayhi salam's nations, Dawud alayhi salam's nations, Prophet Islam's nation, right? क्योंकि वो उस टाइम के मुस्लिम थे ना, उसमें भी ऐसे लोग थे जो उनको फॉलो करते थे और कुछ ऐसे थे जो डाइवर्ट हो जाते थे, इतराज करते थे, अलग चले जाते। आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं, यानी वो उस टाइम पे वो भी उस टाइम के मुस्लिम ही कहलाते थे, लेकिन उनके अमाल डिफरेंट थे। हमारे टाइम में भी ऐसे हैं। So Allah is mentioning this for everybody. हम्म, आप देखें, जब तक हम बैठ के ना आयात के ऊपर गौर नहीं करेंगे ना, पॉन्डर नहीं करेंगे कि व्हाई दिस इज बीइंग सेड एंड व्हाट वर्ड इज रेफरिंग टू व्हाट, आपको कुरान का ट्रू मैसेज नहीं मिलेगा। अगर हम इसको सिर्फ रीड थ्रू करके चले जाएंगे तो जनरली फर्स्ट इंप्रेशन, जब मैंने भी इसको पढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो यही आता है कि ओ द नेशन ऑफ प्रोफेसर, इंसान का ज़हन नहीं जाता। But हम्म, if you dive deeper and start pondering, then you realize that Allah's wisdom is very, very just. जो उस दौर के लोग थे, उनमें भी मुसलमान थे। इट्स लाइक वो क्लास 5 के थे, उसके बाद सिलेबस इंक्रीज हो गया, फिर मैट्रिक आया, उसके बाद फिर सिलेबस इंक्रीज हो गया, फिर बुक चेंज होती रही ना। हम्म, Those who kept on going are now today's Muslims. Okay. पता होगा ज़ालिका तो आप लोगों को, जी राइट? इसम इशारा That. जी, दिस इज इसम इशारा। ए ओके, दिस पॉइंटर, पॉइंट कोई लेबल लग सकता है इस पे? मुब्तदा A. जुमला इस्मिया का ए लग सकता है, मुब्तदा लग सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली दैट इज फदलुल्लाही, हर्फ ऑफ इदाफा इदाफा। Fadlullah. फजल होती है बाउंटी ऑफ अल्लाह, किसी बाउंटी, रिवॉर्ड, बट फजल इट्स अ बाउंटी, दैट इज द बाउंटी ऑफ अल्लाह। हम्म, यूती जो है, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फेल, हमने नहीं पढ़ी हुई सर्फ कॉम्प्लेक्स वाली। सो बेसिकली इट मींस टू गिव, ठीक है, it means to give, and this is basically a fail. So it's present tense, it's 1 and 2, and it has, sorry, 1 and 2 and 3, it has he three attached yes to it, ठीक है, युति he gives it, gives it he gives him won't make sense. Man yasha, मन इज हर्फ ओ सॉरी वो मौसूल correct, good. So this is ism mausul man, ठीक है। So yasha'u is silatul mausul, it's a present tense, it's 1 and 2, it's which pronoun? यश हुआ हुआ। यशा का मतलब तो पता होगा, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, काफी यूज विश करते हैं हम लोग, right? Or what he wants or what he wants wishes. Okay? So whoever, oops, he wishes. अब इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ मिसिंग है, Two. कहाँ पे लग सकता है टू? This is the bounty of Allah. He He gives it to. whoever he wishes. Because two is not in the Arabic, right? He gives it to whoever he wishes.
ठीक है, wallahu ataf, And yes, and this is a mubtada, it's Mubtada. wallahu, okay, zul fadlil azim. Possessor of. Correct. So this is an ism. If you Ism. don't remember, it's a special ism. It shows its status by the ending letter za, zu, and zi. Okay. And this is a mudaf. So mudaf ilay. So that effectively means the possessor of the bounty. Great one. Right. The bounty. Al-Azim, Al-Fazli or Al-Azim ka relationship? Sifa. Mawsuf, Sifa? Sifa Mawsuf. Correct. Mawsuf Sifa. Mawsuf. Yes. The great. That's your ayah number 21. Okay. Raise towards maghfirah from Allah, from your master, and Jannah, its width is like the width of the sky and the earth. It is prepared for those who believe in Allah and the messengers and his messengers. That is the bounty of Allah. He gives it to whoever he wishes, and Allah is a possessor of the great bounty. That's your ayah number 21. This ayah will look very similar to you. आपने ये पहले की हुई है, ठीक है? सूरह तगाबुन में हमने की थी. It's a similar message. Ma asaba min musibatin. Ab just to remember, what type of ma was this? Sorry, Father, so ये जो हमने अभी पिछली आयत में ज़ालिका पढ़ा है, that is the bounty. That is the bounty. अब ये bounty मतलब grammatical sense में भी ये फजल, अल्लाह के फजल की बात हो रही है ना कि ये जो जन्नत या बाग की बात हो रही है, ये ग्रामेटिकल भी कोई है इसमें लिंकेज? इसके अंदर ये जो सियादी पीछे बात बताई गई है, जो अल्लाह ताला ने प्रिपेयर किया है बिलीवर्स के लिए, that is referring to all of this. आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको दो चीजों की तरफ बुला रहा है. एक मग़फ़िरा, राइट, and as a result of that मग़फ़िरा the जन्नत, राइट, जिसको डिफाइन किया गया है. So this maghfirah and this Jannah is a bounty of Allah. Allah is referring to. And लेकिन उसके बाद मन यशा वाला भी आ गया, मन यशा. जी, of course, वो तो अल्लाह ताला की हिकमत है कि जिसको चाहे दे, जिसको चाहे नहीं दे. And we believe कि his justice is just. इसमें एक चीज और है जो grammatical point है, वो कि scholars कहते हैं कि why did Allah choose to say maghfirah before the Jannah? So what's the point there? तो उसके ऊपर जो opinions हैं वो ये है कि आपने अगर आपका एक ग्लास पड़ा हुआ है, वो डर्टी है और आपने पानी पीना है, तो आप पहले उसको वॉश करते हैं और उसके बाद उसमें पानी पीते हैं. इंस्टेड आप पहले पानी पी लें और कहें यार उसके बाद मैं वॉश कर लूंगा. You get rid of the dirt before you actually do something nice with it. So to qualify for Jannah, you have to get rid of the dirt, which is through the maghfirah. So once you're done, then Allah gives you Jannah. ठीक है? और ये जो Jannah है, ये कोई Jannah है जिसका width एक certain level का है and all of that. It may be different from the Jannah that we know. Allah knows. It's a matter of unseen. And Allah wishes, whoever He wishes, He can give it to. ये तो उसका ही फैसला है. तो इसमें इसके अलावा ग्रामेटिकल डेप्थ बहुत सारी होगी. आई एम श्योर अगर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे बलागा स्टडीज में, पर ट्रांसलेशन के लेवल पे ऐसा ही है, कोई इससे ज्यादा
नहीं है. It's just that we need to mark it B. So this is khabar. Yes, this is khabar. Okay. Right. So back to the question, ma, what type of ma is this? Is it Negation. mawsul? Negation. Negation ma. Ma asaba. Asaba meant, याद है क्या मतलब था asaba का? Reaches. नहीं. Strike. No calamity can strike. ठीक है? Strike. So what type of word is asaba? Fail. It's a fail. Good. It's past. Past. Right? It's like nasara. Ma asaba. It has one and two in it. Min musibatin harf of jar. Musiba is a calamity. Calamity. Right? So this was number 4. हमने सूरत तगाबुन में क्या पढ़ा था? मा असाबा मिन मुसीबतिन Illa biiznillah. इल्ला बिइज़्निल्लाह, without the permission of Allah. यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा. मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम. फिल अर्दी harf of jar, Harf of jar. right? This part. Wala ataf and negation. Yeah. Fi anfusikum, harf of jar again. And this is idafa. Translate कर सकते हैं इसको आप. खुद से कर सकते हैं. No. No calamity strikes in earth. इसको पहले वर्ड बाय वर्ड करते हैं. जी. अच्छा, यहाँ पे मिन उधर भी था. मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह. But it could have been said मा असाबा मुसीबतन इल्ला बिइज़्निल्लाह without जी. min. Right? तो हमने पढ़ा था कि मिन क्यों है यहाँ पे. कुछ याद आ रहा है? मैं को आई थिंक वो भी कर सकते हैं, लाइक इफ अगर ना भी हो Remove. तो इट्स हाँ, फाइन. अगर रिमूव करते तो सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टैंड करता हमारा. जी. राइट? तो मिन को लगाने की क्यों जरूरत थी यहाँ पे? ये चीज हमने वहां पढ़ी थी. राइट? So when you have a situation like this is called min zaida. It's an extra min. Yeah. And when you put an extra min to represent कि it's any kind of calamity. Any kind. ये min literal translate नहीं होगा from calamity. इस तरह नहीं होगा translate. तो बेसिकली आप इसको इस तरह ट्रांसलेट कर लेंगे, एनी काइंड ऑफ कैलामिटी. Calamity. In earth. बेसिकली आप जब हम इसको एक प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब लिखेंगे, यू वुड बी सेइंग समथिंग लाइक नो कैलामिटी ऑफ एनी काइंड स्ट्राइक्स. हमने इसको प्रेजेंट टेंस में क्यों मार्क किया है? स्ट्राइक्स को स्ट्राइक क्यों नहीं कहा हमने? Because ये फ्यूचर में भी बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ. तो पास्ट टेंस क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? जो negation in past. पास्ट टेंस को फ्यूचर रिफ्लेक्ट करने के लिए कब यूज करते हैं? ये वो कि नॉट एट ऑल वाला था कि मतलब कि नेवर बहुत ही विद एम्फेसिस था. लेट मी रिमाइंड यू, पास्ट टेंस लिटरल जब यूज होता है तो पास्ट के लिए यूज होता है, लेकिन पास्ट टेंस किसी ऐसी चीज के लिए यूज हो दैट इज बाउंड टू हैपन फॉर श्योर. To give you that assurance that there is no doubt in it, nobody can change it, then past tense can be used to represent present or future. Iza jaa nasrullah.
ठीक है, jaa is past tense, right? That's the reason you have past tense, but you are translating it in present tense because the calamity can strike now or it can strike in the future, right? It cannot strike in the past. वो तो जो हो गया वो हो गया, right? Okay, फिल अर्दी ट्रांसलेट कर दें. In earth. In the earth. In the In the earth and neither, can I say neither instead of neither. yeah, neither in In anfusikum, yourselves. 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 How does calamity strikes in yourself? Inner shaitan. Emotional, physical. What can be Financial. calamity? इनसे हमारे अंदर क्या calamities हो सकती हैं? तो फिजिकल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, मेंटल, एनीथिंग. स्पिरिचुअल जिन्हें फिजिकल कैलेमिटी, लेट्स से कोई बाहर जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, राइट? जी. वो तो कैलेमिटी फिल अर्थ है ना, इस दुनिया में हुई ना उसके साथ. Spiritual. Anfusikum is about you, yourself, only you, nothing else. It's you. It's more, if you ask me, for me it's more spiritual inside you, right? तो वो क्या हो सकती है कैलेमिटी? क्या ये कैलेमिटी हो सकती है कि मैं उम्मीद छोड़ दूं अल्लाह ताला से? जी. मैं क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता है, बाकियों के साथ तो नहीं हो रहा? लैक ऑफ ईमान हो सकती है कैलेमिटी? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. इसमें ऐसा भी हो सकता है फादर कि ये फिल अर्दी का मतलब है कि एज अ ग्रुप वो सब सारे लोगों के लिए, और फिर अनफुसिकुम एक स्पेशल. अनफुसिकुम तो प्राइवेट ही होता है यानी, लेकिन अनफुसिकुम दोनों एंगल से देख सकते हैं मेरे ख्याल में आप. एक तो पर्सनल प्राइवेट एंगल है, प्लस हमारे जैसे स्पाउसेस के आपस के रिलेशनशिप्स हैं. देयर कैन बी कैलेमिटी बिटवीन अस. यहाँ पे कुम यूज हुआ है, राइट? तो दे कैन बी कैलेमिटीज. हमारे दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे अपने बच्चों से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दोस्तों से होते हैं, रिश्तेदारों से होते हैं, राइट? सो बिटवीन पीपल, बिटवीन यानी ब्रदर्स इन इस्लाम, सिस्टर्स इन इस्लाम, आपके होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो जब आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको भी आप इसमें, इस अम्ब्रेला में फैक्टर कर सकते हैं मेरे ख्याल में. But it's more about between people and between inside myself. It's not about material things anymore. It's not about my car hitting a tree. That is fil ardi. अब उस आयत में अल्लाह ताला ने कहा था मा असाबा मिन मुसीबतिन, बस यहाँ पे रोक दिया था. No calamity of any kind. This is more specific. अब मुसीबतिन is common. फिल अर्दी क्या उसकी कॉम्प्लेक्स सिफा नहीं है? रसूलुन मिन मक्का. Okay? And फी अनफुसिकुम भी इसकी एक सिफा हो सकती है, कॉम्प्लेक्स सिफा हो सकती है, राइट? सो लेट्स पॉज इट हियर, इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? सो ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे. डोंट फॉरगेट दैट टेस्ट 3 वीक्स. ओके, इंशाल्लाह. I am in a